once again to the next topic, the human respiratory system. Till now we have discussed about what is respiration, what are the types of respiration. Now moving ahead to the next topic, human respiratory system. Here a diagram has been made for you. Now if we talk about the part of the respiratory system, we can see the first is nose, second that's trachea, third we talk about bronchus or bronchi, fourth bronchioles, and fifth lungs, sixth alveoli. Right now, these are the parts of our respiratory system. Here we can see that nose, then the windpipe, then bronchi. This is these two plural form. Bronchi, then bronchioles, and alveoli. So let's see how this structure works basically. Right. अगर हम शुरू करते हैं from our nose. So nose has two openings called nostrils. The nose has two openings called nostrils, right? ये दो opening nose की क्या कहलाती है? Nostrils कहलाती हैं. Now the nostril is lined up with fine hairs. Nostril is lined up with fine hairs and the mucus. So what is the purpose of this fine hair and the mucus? Basically, when जब हम सांस लेते हैं, जब हम intake करते हैं, inhale करते हैं air, तो lots of dust particles or the germs enters to the air to our respiratory tract. Now this fine hairs, they act as filter, and the mucus basically provides a moisture to the air that makes the passage easy throughout the windpipe. Right. So this is the first thing. Nose, nostrils, fine hairs पाए जाते हैं, mucus होता है और ये क्या करते हैं हमारे एयर को फिल्टर करने में और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में हमारी हेल्प करते हैं. राइट. द नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया. अब हम जब नोज से थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैकिया. ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ट्रैकिया है, या जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं. राइट. सो अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाई द ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अगर हम देखें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो वॉशिंग मशीन का पाइप होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं जिसमें रिंग्स बनी होती हैं. द सेम स्ट्रक्चर इज ट्रैकिया. राइट. तो ये कई बार 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ट्रैकिया इज मेड लाइक सो. ये ऐसे सी शेप के कार्टिलेज रिंग से क्यों बना होता है? तो द आंसर इज वेरी सिंपल. कई बार हम देखते हैं कि in the absence of air the plane pipes gets collapsed or the both ends they joins. ठीक है, उसके बीच में अगर एयर नहीं होती है तो वो क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं. राइट. सो ये ट्रैकिया के लिए रिंग्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सो दैट इन द एब्सेंस ऑफ the air, trachea या air passage do not collapse. Right? ठीक है. तो trachea की जो C shaped rings हैं और ये किसकी बनी होती हैं? ये कार्टिलेज की बनी होती हैं. वो क्या इंश्योर करती हैं? They ensure that the air passage do not collapse in the absence of air. This is the answer part. Right. So ये हमारा ट्रैकिया के बारे में आ गया. ये इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रैकिया के बारे में ये हमें पता देखना है कि दिस इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. ट्रैकिया आगे जाकर क्या होता है? इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स एंड बोथ द पार्ट एंटर्स टू ईच लंग. राइट. उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं. ये ब्रोंकस आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. राइट. these branches are termed as bronchioles and at the end of तो ये bronchus and bronchioles we have discussed alveoli
ये trachea further divides into bronchus, and then the bronchus further branched to bronchioles, right? Now ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ब्रोंकस दोनों लंग्स में एंटर करते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स एक ब्रांच लंग्स के अंदर फॉर्म करती हैं, एंड एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ब्रोंक्यूल देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ अगर हम अब बाकी इतना तो क्लियर है, अब हम थोड़ा सा आगे अगर हम बात करें कैसे और चीजें काम करती हैं, तो हमें जो अभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेट्स डिस्कस दैट कि आगे क्या है, राइट? ना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन है दैट इज अबाउट द एल्वियोलाई। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा एल्वियोलाई का है। ना इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम एल्वियोलाई के बारे में बात करें, इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई क्या है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हमको पता है हार्ट से ब्लड लंग्स तक आता है टू गेट द ऑक्सीजन, राइट? सो जो ब्लड वेसल्स है, जो कैपिलरीज दैट सराउंड्स द एल्वियोलाई, द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन देम टेक्स प्लेस, राइट? इसको हम थोड़ा सा अगर एक जनरलाइज स्ट्रक्चर से समझ सकें तो दिस इज द एल्वियोलाई एंड दिस इज द ब्लड वेसल। ये स्ट्रक्चर को हम एल्वियोलाई कह लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल, ठीक? ऐसे ही सारी एल्वियोलाइज क्या होती है, दे आर कवर्ड, दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स, दे आर रिचली सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। नाउ होता क्या है, हमने एयर इनहेल की, now this alveoli gets filled up with oxygen, and at the same time when the blood is coming from the heart to the lung, it will be rich in carbon dioxide. ये जनरलाइज सी चीज है, ठीक है? So here the process which is responsible for this gaseous exchange is diffusion, ठीक है? ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल, इट टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड diffusion. Now diffusion, as we all know, the movement of particles from the higher concentration to the lower concentration. Here in this condition the concentration of oxygen is more in alveoli, so it moves from alveoli to the blood vessels, and at the same time the concentration of carbon dioxide is more in blood and that will move to the less concentration, so carbon dioxide will move to the alveoli. So this is how basically the exchange takes place in the alveoli. This blood capillaries, they are very fine, the wall is very thin, right? So they are easy, that facilitates the easy transportation of gas between these two, right? So this is how the gaseous exchange in the alveoli takes place, and carbon dioxide, it gets released from the lungs, we exhale, and carbon dioxide is removed from the nose, and rest oxygen, it's circulated to, again it goes to the heart, and from the heart it gets circulated to the body. So this is how our respiratory system works and the exchange of respiratory gases, right? So jaldi se let's see one more point. In your examination you can get one more topic that is called residual volume of air, ठीक है? एक और टॉपिक मिलेगा आपको, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? जब हम बात करते हैं, हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, तो हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, लंग्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर इन ऑलवेज। लंग्स में हमेशा थोड़ी एयर बची रहती है, सो दैट
जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए टाइम हो वो प्रॉपर टाइम मिल सके। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हम किसे कहते हैं? द एयर प्रेजेंट इन लंग्स। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट, so that amount is basically termed as the residual volume of air, right? And what it does, it facilitates the easy inhalation and exhalation. So this is all about your respiratory system. Thank you.